हेलो, गुड इवनिंग प्रिंस जी, सज्जन कुमार, नरेश जी, सभी लोगों जितने लोग सभी लोगों को नमस्कार। प्रिंस जी, आवाज आ रही है? हाँ, yes sir, we are getting voice. ओके ओके आवाज आ रहा है। ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ सज्जन कुमार जी, आपने रिक्वेस्ट भेजी थी तो प्लीज आप अपनी बात को रखें। ठीक है सर। आपका कोई क्वेश्चन है या आपने केवल स्पीकर मोड में रहने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है? सज्जन जी हेलो। नहीं, मेरे को क्वेश्चन नहीं था, मेरे को एक व्यू था निफ्टी पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शेयर करना चाहिए। ओके ओके ओके, बिल्कुल। हाँ तो सृजन जी आप बताइए, अपना व्यू दीजिए। हेलो। यस सर। जी, मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल सर, सो मेरा हिंदी थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे आप इंग्लिश इंग्लिश में में। कोई प्रॉब्लम नहीं, एज यू लाइक। थैंक यू सर। Good evening everyone, so thanks for the giving opportunity. See, if we see on Jan 18 2022, when Nifty is around 18,300, everyone expected that it will cross all-time high, and everyone is giving 19,000, 21,000 as targets on Nifty. But to everyone's surprise, from 18,300 to market has returned to 16,800. Okay, see the same pattern which has formed on the Jan 18th, it is repeating now again on the charts. So which is the everyone expected all-time high, then market got reversed from 17,992. So from that level again I am expecting around 16,800 levels. So with a stop of 17,992, so in coming days, as yesterday's Fed also told that, so inflation is high and interest rates will be increased to 0.75 bps. So as you know, we should stay cautious at this level. So I am not saying that will not go up, but should stay little cautious on the market. We can expect 16,800 in the coming days. And the auto stocks and banking stocks are looking weak for me. So which took this rally from 15,200 to 18,000. Only two sectors has been moved the entire rally. So the two sectors are giving me a sell entry. So I'll be cautious for the target of 16,800. So at 16,800, I will see whether I need to go bullish or again I need to continue to be bearish. Thank you, sir. ओके, थैंक यू सजन जी, थैंक यू। तो लास्ट वीक में संडे को मैंने स्पेस किया था और उसमें हमारे रजत बोस जी को भी इनवाइट किया था, तो वो भी आए थे और उसमें स्टार्टिंग में मैंने अपना व्यू शेयर किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि लास्ट वीक में हमारी निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई थी वो वीकली पिवोट के नीचे हुई थी, और हमने ये भी मेंशन किया था कि वीकली पिवोट के नीचे क्लोज होते ही हमें पहला संकेत मिलता है, मतलब रैली के एग्जॉस्ट होने का। और वो देखिए उसका संकेत जो मिला मुझे, तो मंडे को ही हमने गैप डाउन ओपनिंग देखी, मंडे ट्यूसडे 2 दिन नीचे रहा, फिर थोड़ा रिकवरी हुई, अगेन हम लोग फिर पिछले हफ्ते के ना तो हाई को टच कर पाए और ना ही जो है हायर लेवल पर क्लोज हो पाया। दैट मीन्स जो लास्ट वीक की कैंडल थी उसके बाद हमने इस वीक की भी वीकली कैंडल एक प्रकार से रेड ही फार्म की, तो फॉलो अप कैंडल भी बेरिश बनी। और उसके बाद कल जो फेड का स्टेटमेंट आना था उसका बहुत ही ईगरली वेट हो रहा था, और उसका स्टेटमेंट जो भी आया उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यूएस मार्केट में किस प्रकार से तीव्र गिरावट हुई। तो साथियों, हम लोगों के बीच में रजत बोस सर ने ज्वाइन किया। प्रिंस जी, हाँ नहीं जी, हेलो, इनवाइट करो उसको। हाँ प्रिंस जी, हेलो, रजत बोस सर नमस्कार सर। गुड इवनिंग रजत बोस सर। सर मैंने आपको इनविटेशन भेजा है, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए सर। रजत बोस सर, This sir, we have Anirudh sir also. So can you send the request to Anirudh? Researcher Anirudh sir.
गुड इवनिंग सर, रजत बोस सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, स्वागत है सर आपका हमारे स्पेस में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। सर एक्चुअली मैंने लैपटॉप के थ्रू एंटर करने का चेष्टा किया बट वो हो नहीं पाया। सर तो सर आप ये सर हमारी आवाज आ रही है सर? अभी आ रहा है, आ रही है? मिल रहा है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो सर आज हम लोगों ने एक फेड के स्टेटमेंट के बाद जिस प्रकार से डाउ जोन्स में डाउनफॉल आया, तो उसके बाद सर मार्केट का आउटलुक, मार्केट की फ्यूचर पोजीशन वैसे तो आपने कंटिन्यूस बताई, लास्ट वीक में भी आपने हम लोगों को अपने विचारों से अवगत कराया था। तो सर अब तो कल जो स्पीच हुई है फेड में पावेल साहब की, उसके बाद सर फर्दर क्या आउटलुक बनता है सर? किस प्रकार से मार्केट बिहेव कर सकती है और क्या हम लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए मार्केट में सर? प्लीज इस पर थोड़ा सा आप अपना व्यू दें हम लोगों को। थैंक यू सर। ये मेरे लिए है क्वेश्चन? यस सर। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे जो बंद दिया वो, और उसके बाद में रात में जब जेरोम पावेल साहब का स्टेटमेंट आया, जेरोम पावेल साहब का स्टेटमेंट में कुछ खासियत है। वो क्या है कि उन्होंने साफ कह दिया शुरू करते वक्त, अपना स्पीच शुरू करते वक्त बोला था कि वो जो स्पीच देने जा रहे हैं वो काफी डायरेक्ट होगा, मतलब उसमें एम्बिग्विटीज उतना नहीं रहेगा का। तो उसमें एक चीज साफ कह दिया कि प्राइस स्टेबिलिटी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज रहेगा। और प्राइस स्टेबिलिटी आने का मतलब क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी आने का मतलब ये रहा कि अमेरिकी बाजार, अमेरिकी मार्केट पे, अमेरिकी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2% इन्फ्लेशन रेट अभी जो 7% से ऊपर चल रहा है, उसी से अभी 2% पे लाने का चेष्टा कर रहा है। और वो ये भी बोला है कि जुलाई में थोड़ा सा नीची लेवल दिखा है इन्फ्लेशन का नंबर पे, लेकिन उसको वो ज्यादा मायने, ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। इसलिए इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, वो बोलता है कि एक बार कोई एक महीना के लिए नीचे की लेवल दिखाया, उसके मतलब ये नहीं कि फेड अपना जो स्टंस है, टाइटनिंग, टाइट मनी पॉलिसी और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, वो बंद कर देगा। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा, हिस्टोरिकल एविडेंस ये बोलता है कि जल्दी अपना जो मेथड वो फॉलो कर रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल पे लाने के लिए टाइट मनी पॉलिसी का, वो जल्दी उससे बाहर आ जाने से वो एक्चुअली उसका जो मतलब रिजल्ट रहेगा वो नकारात्मक रह सकता है। तो इसीलिए वो साफ ये कह दिया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने जा रहे हैं। और ये भी का हिंट दिया है कि जो करते आए हैं वही करेंगे। मतलब सितंबर में जो एफओएमसी मीटिंग है उसमें 75 बिप्स और भी फिर भी एक बार आ सकता है। बट वो ये भी बोला है कि सितंबर में जो करेंगे वो डेटा डिपेंडेंट होगा, तो देखते हैं। लेकिन इतना सा क्लियर कर दिया कि रेट बढ़ाना बंद करना आगे जाके, उनका क्लियर इंडिकेशंस था कि अभी तुरंत ये कोई चेंज लाना और रेट हाइक करना बंद करना, ऐसा संभावना पैदा ही नहीं होता है। जाके आगे वो देखेंगे कि इन्फ्लेशन सिर्फ नहीं, वो एक बहुत अच्छी चीज बोला है जो मैंने भी टीवी पे और कई जगह पे बोला है कि इन्फ्लेशन से ज्यादा खतरनाक चीज होता है इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन। मतलब लोगों के मन में जब रहता है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही है, ये जो है ये लोगों की उम्मीद जो ब्याज मतलब महंगाई बढ़ते रहेगा, ये अगर होता है तो ये बहुत ही मुश्किल होता है कंट्रोल करने, प्राइस स्टेबिलिटी लाने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। क्यों? आपके मन में अगर ये होगा कि महंगाई बढ़ते रहेगा तो आप वेजेस के लिए, वेजेस मतलब आपको जो तनख्वाह मिलता है वो आप बढ़ाने के लिए आप
अपना जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे आपका डिमांड रहेगा। ये अमेरिकी बाजार में बहुत जल्दी फील होता है। तो इसीलिए वेज प्राइस इन्फ्लेशन की जो संभावना है वो वेज प्राइस इन्फ्लेशन होने के साथ साथ डिमांड भी शूट करता है, क्योंकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होने से वो डिमांड एक्चुअली बढ़ता ही जाता है। तो डिमांड को कंप्रेस करना उनके लिए अभी टॉप प्रायोरिटी है। ये भी साफ साफ कह दिया है कि इसके लिए लोगों को कुछ परेशानियां संभालना पड़ेगा, लेकिन वो परेशानियां प्राइस स्टेबिलिटी नहीं आने से जितना खतरा पैदा होगा उससे कम है। तो दैट मीन्स जो वॉल स्ट्रीट और दलाल स्ट्रीट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फेड अभी आरबीआई की तरह बोलेगा, आरबीआई गवर्नर ने एक टीवी इंटरव्यू में बोला है कि इन्फ्लेशन एंकर्ड हो गया, तो वो एक खुशी के कारण हुआ अपना यहाँ का बाजार में। बट फेड ने ऐसा कुछ नहीं कहा। फेड चेयरमैन ने सीधा बोल दिया कि वो कुछ भी हो, उन्होंने अभी प्राइस स्टेबिलिटी को लाने के लिए जो भी करना पड़ेगा, मतलब जो कर रहे थे वो कंटिन्यू करते रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स विल गो अप। इसके चलते जो होगा, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है, एक चीज समझ के चलिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से शेयर मार्केट का डर ये उतना क्यों आता है? क्योंकि आपका ब्याज दर जो आप कर्जा लेंगे उसका ब्याज दर बढ़ जाएगा, ये होता है। लेकिन उसके साथ सिक्योरिटी मार्केट का मतलब शेयर बाजार का संबंध ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो अर्निंग्स यील्ड, मतलब ये जो पी रेशियो का आप उल्टा कर देंगे, अर्निंग्स को ऊपर में ले जाएंगे और प्राइस को नीचे लाएंगे। तो जैसा कि मान लीजिए कोई शेयर का भाव 5 रुपया, शेयर का अर्निंग्स 5 रुपया है, भाव 100 रुपया है, तो उसका पी होता है 20, और पी को उल्टा कर दीजिए 1/20, दैट इज 5% यील्ड। तो अगर आपको जब आप कर्जा लेते हैं उसमें अगर आपको ज्यादा ब्याज मिलता है, तो उसके ऊपर में जब आप शेयर खरीदेंगे बाजार में, तब आपको शेयर के लिए एक इक्विटी रिस्क प्रीमियम जोड़ना होता है, जो कि इंडियन मार्केट में बहुत ही कम दिखता है। लेकिन बात यह है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कंपनीज को भी बहुत ही मुसीबत पैदा होता है, क्योंकि पहले जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है और अभी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बढ़ जाता है। इसी के कारण कंपनीज का परफॉर्मेंस इफेक्ट होगा, उनका जो नफा होता है उसमें कमी आएगी। बट एक चीज जो अमेरिका में होता है लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे इक्विटी रिस्क प्रीमियम बोल के कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे बैंक डिपॉजिट में 5, 5.5, 6 तक आपको मिल जाता है। और आप जब कोई शेयर खरीदते हैं, आप बोलिए ना 6% अर्निंग फील्ड में कितने सारे काउंटर्स खरीदते हैं आप, कितने सारे मिलता है। यहाँ पे वो सब नहीं चलता है। यहाँ पे ऐसा ही क्यों होता है ये कि यहाँ पे लोग सोचते हैं कि वो ऐसा रिस्क प्रीमियम लेने का जरूरत नहीं है, गाड़ी दौड़ रहा है तो उसी में ही रिस्क, वो ग्रोथ, आप लोग ग्रोथ प्रेडिक्ट कर देंगे कि आगे जाके और बढ़िया ग्रोथ होगा, तो उसके चलते इसका भाव और बढ़ेगा। सो वो जो इक्विटी रिस्क प्रीमियम का कैलकुलेशन होता है वो यहाँ पे लागू नहीं होता है। बट अमेरिकी बाजार में ये सिचुएशन पैदा होते एक चीज होगा, जैसा पिछले दिनों में हुआ था। हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट्स इन यूएस इकोनॉमी बढ़ते ही क्या है, जो एफआईआई होता है, जो यहाँ पे कर्जा के मार्केट में मतलब डेट मार्केट में पैसा लगाता है, वो यहाँ पे जो उसको मिलता है डेट मार्केट में जो इंटरेस्ट मिलता है, और इन्फ्लेशन मतलब इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जो होता है कि अमेरिकी बाजार में कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा। और इसके साथ अगर आपका डॉलर के मुताबिक रुपये का डिप्रिसिएशन जो होता है, उसी में से अगर आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल अगर कवर हो जाता है, तो एक्चुअल में यहाँ पे डेट मार्केट में पैसा लगाने से उनका मतलब लॉस लेना पड़ता है। तो क्या होता है, इसके चलते और एक चीज भी होता है कि यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं जाता है और अमेरिका में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, तो करेंसी के भाव के ऊपर प्रेशर आ सकता है। जो अभी जो डॉलर के मुताबिक रुपी मतलब
80 रुपया में $1 मिलता है, वो हो सकता है कि 80 रुपया पार करके 81 रुपया भी पार कर सकता है। तब क्या होगा कि अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ डॉलर आउटफ्लो भी हो सकता है। थोड़ा सा इन यूएस इज द बिगेस्ट। आप अगर बोलेंगे हम लोगों को यहाँ पे अभी हो सकता है, ऐसा कुछ लोग सोच सकता है कि हम लोगों को यूएस से कोई लेना देना नहीं है, वो जाए भाड़ में, हम लोग जो भी करेगा वो चलता रहेगा, हम लोग को देश में अपना अपना काम करेगा। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन एक चीज मान के चलिए कि यूएस इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर मेनी नेशंस। हम लोगों को हम लोगों से भी वो उसका जो संबंध है वो एक्चुअली टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। अपना जो एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा यूएस में जाता है, उसके बाद में सेकंड हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इज चाइना। तो ये सब कंट्री में कुछ चेंजेस होने से यहाँ पे भी उसका फर्क पड़ेगा, चाहे आपने कितना भी बोलते रहे कि हमारे यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा। आप देखिएगा आरबीआई का स्टांस में इसका इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए एक थोड़ा मैं ये बोलूंगा कि दिस कुड एक्चुअली usher in the corrective downtrend of that 63 calendar day old 2809 points price amplitude जो 17 जून से आप अगस्त का कितना शायद 19 अगस्त तक देखे हैं, उसी का करेक्टिव मूवमेंट इसी के कारण शुरू हो सकता है, यही मैं उम्मीद करता हूं। ऐसा ही मैंने अपना यूट्यूब मार्केट व्यूज में भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं उसको। बट आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव। इफ दिस इज द स्टांस ऑफ मिस्टर जेरोम पावेल, देन देयर विल बी a PE compression all over the world. I have one question. Like in our last conversation, you were saying the financials and NBFC space is shaping up well. So with this interest rate hike and the ripple effects which US market will be creating on our market, so how you see it will impact the credit cycle? Because money is the raw material for banks and financials. So if the rate hike will for sure, put a stop on discretionary spending or so. So how you see this panning out? What I see is that because of this, there will be some pressure on our interest rates as well, because the interest rate differential, although we may say that it doesn't really matter and all that, lot of such, see, we have become one of the greatest our nationalistic fervor might actually lead us to rubbish this, that whatever has happened there may not have an impact. That is, of course, the emotional response. But fundamentally speaking, this will definitely impact even the financial sector, and the interest rates here also are likely to move up. If you remember, last time Fed meeting के पहले RBI before even जब RBI पहला 50 बिप्स रेट हाइक किया था, वो कोई मीटिंग के अनुसार नहीं किया था, मतलब शेड्यूल्ड मीटिंग के अनुसार नहीं किया था, इमरजेंसी मीटिंग कल करके वो फास्ट 50 बिप्स रेज किया. So this is actually going to create some problem, and this will have an impact on the FIIs. How would they behave here? I believe they would again start selling. Their chances are that they would sell here once again. And mind you, this rally that happened on the back of only $3 billion purchases of FIIs. So a lot of people said that what they did with $33 billion sales, we have achieved with their participation of just $3 billion, but our own people have actually pushed it up. Things are not that rosy. Worldwide, the interest rate cycle has changed. Let us accept that. If you don't,
then you are in a problem, because for the last 40 years, since 1980, the interest rates all over the world, it has been going down, and now it is on a reverse course. And this will actually increase the cost of capital for every sector, not just the financial sector. So chances are that we would see larger corrections happening in our markets. So to speak, sir, what we have not seen in last 2 decades, like proper bear cycle. So can we, I mean, anticipate that could be a possibility going forward? I would like to tell you, I would like to take a name of an analyst in the sense that she's a fund manager, and she is an Indian now settled in the US and managing funds there, Rupal Vansali. She, while giving interviews here in a number of TV channels, especially the English ones, she has really said that for the US, it could be a lost decade kind of a thing, and and its impact will be felt all over, all over the world. And just try and think on this particular certain data, like when the in March 2022 this year, FIIs shifted their focus from India to China. Why did they do that? They did that because Chinese equities were at low levels. So they are always fishing for opportunities, and they might actually, if they find that Indian stocks. By the way, recently Economic Times published a statistics on its front page last week, which showed that on all parameters, India is far more expensive compared to a lot of emerging markets. And some of the emerging markets are actually performing much better than us. So probably money might shift there. And if FII start selling, I don't think your Indian institution will come to give a support, because it is, if worldwide things are equities are actually about to go down, then there is no point. Even RBI would not be supporting the rupee just like that, because to support the rupee, it would actually need to spend a lot of, it would have to sell billions of dollars that they are not going to do. So every possibility that there is likely to be some kind of a second leg of correction, whatever you saw up to 17th of June could be the first leg of correction. I'm not specifically using the term bear market, because last 20 years, I have calculated about 25 to 28 months here, and plus or minus, not plus or minus, 25 plus 3 or 25 plus 2, according to your calculation or my calculation. Total 2008 bear market and 2013-14 bear market. These bear markets are very minimal compared to the 20 years you have spent in a bullish mode. And a lot of people yesterday night, after the Fed chairman's speech, I've seen such comments on Twitter that people said, अगर लोग अमेरिका अगर Vajpayee ji, are you able to hear Rajat sir? नहीं सर की आवाज कुछ ब्रेक हो रही है शायद रजत साहब की, तो हम वेट करते हैं 1 मिनट. Rajat sir, if you could hear us, we are not able to hear you properly. Please check your connection maybe. In the meantime, Deepak bhai, you can chip in. And Vajpayee ji, can you DM Rajat sir about it? We are not able to listen to him. Yes. Okay. Thanks. Actually, I had a couple of questions for Rajat sir. Okay, Deepak bhai, let's wait for him to join. And then, yeah. Thanks.
Rajat sir, in the other case, you can drop once and join again, and perhaps we will add you as a speaker again, so the issue might resolve. अच्छा अंकित जी, आप जरा अनम्यूट करके बोलिए, देखिए आवाज कुछ आ रही है अभी। हेलो अंकित जी। हाँ हेलो वाजपेयी जी, आवाज आ रही है क्लियरली? जी 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 चलिए। अच्छा अनीश जी, इस बीच में मैं चाहता हूँ अनीश जी आप अनम्यूट करके कुछ तब तक इस बीच में आप अपना व्यू दें, और अगर रजत जी से कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी पुटअप करें प्लीज जी। हाँ जी वाजपेयी जी। सो बेसिकली काफी कुछ तो रजत जी ने कवर कर लिया है, बट मैं कुछ डेटा पॉइंट्स भी और इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि आपका यूएस जो डॉलर इंडेक्स है DXY वो कल 108.84 पर शूट अप किया है, एंड द ईयरली हाई इज 109.29. So with this change in the actually, what has happened is that I have been saying this repeatedly for more than a month since the last Fed meeting, July 27th को जो final meeting थी, the previous interest rate decision. The market and the analysts and the traders have completely misread and misinterpreted the Fed statement. Nowhere did the Fed say that they are becoming dovish, they are going to slow down the pace of the rate hikes, or they will even consider, which the market went and wrongly assumed, that after 1 year they will start reducing the rates. Nowhere. In fact, what they said, and that is where the problem arose and the market shot up, which was completely unwarranted. What they actually said was that we are totally data dependent. We are going to be very aggressive with our rate hikes because we want to bring inflation down. As the data comes in, we will take a decision as to what is the next step. Market went and assumed that the inflation will come down and things are okay and everything will be back to normal as they was before, and market took a huge rally. So uske baad mein there were a lot of the other Fed presidents as well as the chief investment officer for JP Morgan and very leading analysts who gave a clear warning saying that market rally is not sustainable. This is based on assumptions and this is not what the Fed has intended. The Fed intention is very clear to bring inflation down, and it will do whatever it takes to bring inflation down. Market seems to have ignored even those warnings and kept going up, and that is the reason that the Fed chairman last night had to step in and clear this misunderstanding and misinterpretation and give a very strong message to the financial markets globally that we are nowhere close to a pivot, and we will hike for as long as required and as much as required. Now, that is a very, very clear message which was required for the markets to kind of adjust to the reality. Because if it doesn't adjust to reality, you will have like an asset bubble going up, wherein all these risky assets like stocks and cryptos, they keep shooting up based on some misinterpretation, and then finally one day you have a big collapse. So last night's, it was a good medicine which was sent by the Fed to undo and the Fed has actually been very, very behind the curve always. So they wanted to correct that, wherein they assumed that the inflation is transient and it's only temporary. So that clear message went out last night, and they're very, very clear that and the job of the Fed, in fact, with discussions, people keep thinking the Fed will not do anything which will upset the stock market. The job of the Fed and the objective is not to support financial markets or stock markets and not to artificially prop up the market and make it go up and up. It is to take care of the whole economy and to take care of the citizens of the US and the common man so that they don't feel the pinch of inflation. Because that effect is far more worse than your stock market going down. Stock market affects most of the wealthy people and who have investable and disposable income to put in the stock market for a quick return. So that, I think that message has gone out very clearly. Now the impact, what I see here is that as Rajatji already said, the RBI cannot be far behind and they cannot be slow on raising the interest rates even here. We may say that inflation is only 7.01%, but if you don't match up with the rate hikes along with the Fed, then your currency is likely to collapse. So that is a bit of a problem. And not just the Fed, even the ECB is now considering, there is a talk
of a 75 basis point hike coming by the European Central Bank. So when interest rates are going so high, there is no way that we can, disassociate and when we are interlinked with the global economy and say that, no, we will stand out. We've got a strong economy. We will not do that. Now, the impact here will be that when we do that, then there will be a lot of pain that we felt across globally. So cost of funds, they go up and the margins of companies will get further hit. Earlier, it was the commodity prices shooting up, cost of, your inputs going up. But now it's going to be the cost of capital, which lot of the, investment houses, just for example, Adani Group, they are heavily over leveraged, very heavily, 2,25,000 crore, 2,40,000 crores. Now, those are the companies which are probably going to take a hit. And it becomes very difficult to when you are having high inflation and you're raising the interest rates to tame the demand with lowering of demand. How are you going to keep increasing your sales and your profits to kind of service that debt? So it's kind of very difficult to do that. And that is where what Rajatji is, I think, saying is that the PE compression will come, which will bring down the stock prices more down to earth, which will be a reflection of the reality. Since markets are forward-looking, they will price in this kind of downward pressure on the company's margins and they will adjust to a much lower level than what they are currently. Because if you see, we almost touched 18,000, 17,992 on the Nifty, and we were just barely 600 points away from a lifetime high. So you can't be at lifetime highs when the whole global economy is going into a recession. And major economies like US and Europe going into recession, that's a problem. Because our exports, 18%, go to the US. And if you see IT, 54% of our IT exports is to the US. So if that economy is slowing down and getting into a recession or already in a recession, then your IT sector, which is a major component in India, is going to definitely take a hit. Since their companies will be doing a lot of IT cuts. So that is going to impact a lot on the IT sector specifically. So Monday morning, you should probably see a big cut even in the IT stocks specifically along with the broader market. And the markets have, gone way ahead of the fundamentals. Even if the inflation is cooling down, we need to understand that after reaching 9.1% core, your CPI inflation in the US, there is no way it's going to come down to the target range of 2% in a very short period of time. Even if the Fed, does whatever it does, it's going to take a long time before it comes down to 2%. And that whole journey, downward journey from 9% to 2% will bring a lot of pain. And when that pain is there, it is felt by individuals and by companies, which is what the Fed chair has said. That means even the companies which will feel pain in terms of, layoffs and your job market gets affected, your housing market is, already started cooling off, that will automatically bring down the stock prices. Because when cost of capital goes up, a lot of the funds will not come into the stock market so easily. The easy liquidity era is over. And in this kind of scenario, for stocks to keep going against the trend, I think it can't happen forever. So I definitely agree with Rajatji's views. And I feel that a lot of sectors will get impacted, and the overall market, there probably won't be a sector which will stand out in this kind of correction. Maybe some will be able to better weather the storm. But overall, I'm looking at a very good correction and a healthy correction, which is needed. You can't just keep going up when the whole world is facing a kind of a big problem that is there. And this problem, if you see in the 1980s also, Fed Chairman Volcker, who was there, the inflation had reached, huge levels. And they had to raise the interest rates very high to bring inflation. And that set off the whole recession and a lot of problems. And then you had the whole crash in 1987, wherein the Dow in one day fell, some 500 points. So those are the kind of repercussions which are there when, sudden measures are taken to kind of, which are required, which if not taken will bring about a disaster in the long run. So that's my view for now. I think I'll give it back to you, Vajpayee ji. Thank you, Anish ji. रजत बोस सर, मैंने आपको दोबारा से रिक्वेस्ट भेजी है, प्लीज अगर आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, प्लीज.
आवाज रजत बोसी को मैंने मैसेज भेजा लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ पाया, लगता है कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है क्या? रजत बोस सर को मैंने वाजपेयी जी आप एक काम करिए, जो ये आपको ऑप्शन दी हुई है ऐड स्पीकर, उसमें जाके अगर आप उनको रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उनको डीएम में रिक्वेस्ट मिलेगी। इन द मीन टाइम दीपक यू कैन come and speak, right? Sure, thanks. So I have half a dozen of questions, so I'll throw it out if someone wants to answer. So first of all, the simple one, that how to trade these extreme views which are being discussed. Second of all, since it was mentioned that Indian markets are the most expensive and other markets are relatively cheaper and are performing better, is a wrong data set. I think Indian market has performed best in the recent times, and most of the time the money is chasing the higher performing asset class. So I think the Indian market is the right thing. Then the third one is with rising interest rate, how equities have done. So on that part, I think since 2000 or something, if you check the data, with rising rates, Indian markets and for a matter of fact, the global markets have also done well and not against. They have not, nose dived or gone to minus 30% or 40%, something like that. So that point is there. Then but moreover, more of a talk as to give a talk, but not tradable or investable advice. On the, I mean, actionable items are not there. That is my whole question out there. So if someone can answer them, thanks. Rajat sir, would you like to take questions? See, the voice was breaking. I mean, actually, I have a problem with today for the internet connectivity. Airtel 200 Mbps line is actually faltering. Anyway, what I would like to tell, I think it was Deepak who was saying that interest rates were going up and we performed well. Deepak, I would like to humbly put one simple statistic. That is 2014 to 2014 to about 2019. Prior to that, this thing happened, but I'm just giving you the recent 8 years or so, what happened. 2014 to 2019, the world central banks, whom I actually consider the biggest bulls. The big bull in any country is its central bank, or big bulls are always central bank, because they had been on a money printing job for a long period of time. They unleashed $16 trillion in the world monetary system between these 5 years, 2014 and 2019. Thereafter came COVID. And from April 2020 till about October 2021, they unleashed another $9 trillion, $25 trillion. Even if you raise interest rates a bit, doesn't really matter, because money was sloshing everywhere in the system. So it isn't possible for what happens when actually the performance of economies, if the real economy doesn't perform, this money actually chases asset prices. Asset prices. While I could not connect as a speaker, I heard briefly about somebody talking about Adani group companies and their leverage positions. I'm not talking about Adani or any. I'm simply saying, if you are highly leveraged, whichever company it is likely to suffer a big deal. It is likely to suffer a big deal if interest rates move up in a sizable way. We are already 140 bips up. RBI may be compelled to raise it further because interest rate differentials, as the other person who was talking, giving very good data and analysis, said that even European central banks are going to raise them. So interest rates going up, cost of capital going up, it won't be that easy to maintain. And tell me one thing,
between 2015 and 2020, each year the analysts have been predicting for the next year or for the year going forward, 20% earnings growth. Each year they were failing. It became a joke. Every year at the beginning of it, people will say 20% earnings growth likely. After that, that earnings growth never really happened. Never really happened, except for the FMCG and other consumer-oriented stories. You did not see much of a great performance out there. Of course, in sectorally, certain sector churnings tend to happen in such markets. But take it from me, we are not an island. We are operating in the midst of other economies. And if all these data that you are collecting, that even if interest rates went up, Federal Reserve at one point of time, Alan Greenspan pushed the interest rate up, yet it was actually moving up. Don't forget that between 2014 and 2021, only quantitative easing happened. Quantitative easing happened earlier, but interest rates went up, went down, that thing happened. But no central bank till date talked of quantitative tightening. QT is something nobody is talking about. If Fed were to bring its balance sheet down, RBI is already doing it. Just imagine what does that mean? Quantitative tightening means that the central banks will actually shrink their balance sheet, and if they shrink their balance sheet, that means they will, instead of bond purchases, which they used to do earlier, now they would be selling bonds. And if they sell bonds in India, they will actually seek, the RBI will ask for rupee. In US, they will be asking for dollars. That means money in the system is actually going back to the central bank. And central bank is not any other bank. Central bank is a central bank that doesn't give loans. That doesn't give loans to the corporates or something. Central bank taking back money means shrinkages of the money stock. And if that happens, long back, I used to say, I heard it by casually from a very veteran trader. I heard that they said, that person said, पॉकेट में पैसा है तो सब कुछ सस्ता लगता है, पॉकेट में पैसा नहीं है तो सब कुछ महंगा हो जाता है. वो possibility है, but that doesn't mean that we are going to crash on Monday morning. No, it may not happen like that. But if the interest rate moves up, and the interest rates here, interest rates other places, then definitely cost of capital will also move up. And cost of capital going up will create a problem. And then a lot of companies that are leveraged, and especially we will have problems if there are foreign currency bonds that have to be redeemed and all that. So it will become a turmoil-like situation going forward. It's not going to be that easy. So my feeling is that, although I know the people like us who track the macro trends and all, we are mocked by even people, those who actually otherwise are highly regarded people. They say that our focus is only on what Fed chairman is saying. But it is not Fed chairman, what is he saying? That has real import. That has got a lot of importance. Only when you haven't seen a serious bear market in the last 20 years, you would tend to think, ये क्या है? इसमें कुछ नहीं होता है. ये Fed बढ़ाएगा, नीचे लाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. अपना गाड़ी चलता रहेगा. चलता रहने से हमको भी बेनिफिट है भाई. हमारा भी पास में एक पोर्टफोलियो है जो कि अप्रिशिएट करेगा. लेकिन रियलिटी और हकीकत को हम इतना जल्दी से छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो क्या हो सकता है. I am in this market actively for the last 30, now it is the 31st year, I would say. But earlier also I used to only track, not participating in it. And I have studied economic history. If the interest rates were to move up, then at least, if not for a long period, at least for some time, the market will be affected. All assets markets will be affected.
That's what I'm trying to tell you. If there is froth, if some companies are moving up on the back of stellar performances, continue to hold them, no problem. But if there is froth in any particular price rise, a lot of mid-cap stocks have recently performed brilliantly. Fine, absolutely great. Even I hold some mid-caps. But the point is that if they are not backed by strong earnings or the prospect of strong earnings, they will see a different trajectory. And that is what I am actually afraid of. This is what I would like to tell you, that I, for one, would not take this lightly, that Fed chairman is so hawkish. I have not seen him that hawkish. This time he has been the most hawkish. अंकित जी, आप अपना अनम्यूट करके माइक अपनी बात पूछ लें साहब से. Good evening, everyone, and good evening, Rajat sir. Rajat sir, I actually have two questions. The earlier Fed was targeting terminal rates of around 3.5 to 3.75, and the money markets are already projecting around 3.75. Now, after this FOMC plus the Jackson Hole saga, what do you think? If we, have to put some number towards the terminal rates, what do you think where it can go? That's one question. And other question, ये थोड़ा आपका I'm trying to understand this thing. Are we running in aggregate? I'm trying to understand that this particular scenario is an example of aggregate supply curve or aggregate demand curve. So these two questions. See, here aggregate supply curve and aggregate demand curve both will be both are because of the supply bottleneck in supply chains that has not been fully cleared up. So it isn't. If you did listen to a roundtable among the central bankers, including Jerome Powell and Christine Lagarde, that was organized by the European Central Bank. There they said that going forward, both the aggregate supply curve and the aggregate demand curve are likely to be affected. It's a scenario where we are facing a double whammy, but ultimately the terminal rate is very difficult to gauge what is going to happen to the terminal rate if the stance become that hawkish. Whatever they were saying earlier, and now if the inflation becomes sticky, and I am actually, I get a bit puzzled by one thing. Every central banker is saying that whatever we are going to do in the next meeting will be, we will be data dependent. But let me just make one small observation. That is, right from 1990s till date, I have read many economists or many central bankers, their articles and all. What I gathered is that monetary measures take about 9 to 18 months to give their effect. So immediately there's data dependency. How is that going to really help? Because why was people saying that the Fed was behind the curve or something? Because Fed was waiting. Actually, if you have to contain inflation, you should have started much earlier. But now there is this problem. There is the problem of 1980s, what Paul Volcker did at that point of time. And there is also a pointer to what happened in 1929, 1930. That time, Fed continued to raise rates. Regarding Volcker's time, Volcker had, Jimmy Carter was the president. Volcker had a free hand, and he raised the short-term interest rates close to about 20%. Inflation and inflationary expectations back of both these two things were broken, and we saw a lower interest rate environment. That was the beginning of the interest rate down cycle. But you have also, if you remember, if you studied, then you will notice that in India, the back of inflation and the inflationary expectations were broken by Chakraborty Rangarajan. There was a time when wholesale price index went down to 1%. That time CPI was not
so well tracked. I mean, it was there, but it was WPI that used to be discussed, all that. So there was a time, I still remember, that people really believed that the prices are not going to go up so easily. That kind of a thing is already fully lost. If that happens, then actually it is going to be a very difficult scenario. And I have, whatever financial history or economic history I have studied, managing the aggregate demand curve and aggregate supply curve at a time, as that roundtable, especially the BIS chief said, that they are also learning, and they are really not very clear as to how things will really pan out. And he said that a lot of research needs to be done to really answer these nagging questions. Yeah, exactly, Raja sir. Actually, I was also looking at the same scenario, and the last case study which I found that was resulted in World War II. So that's why I was particularly asking you this question. Second thing is, basically what I'm trying to target, like what I'm trying to, guess. This is if the terminal rates go beyond 4, my 10 years will bump, or if the projections, even if the projections for the terminal rate go beyond 4%, my 10-year projections will go above 3.2, and my 2 years are already above 3.4 level, which we are tracking quite closely. So if these two levels are breached and sustained by these bonds, then I don't know who can save the US economy from the classical recession. I'm not talking about shallow recession or technical recession. I'm talking about the classical recession. And if US economy hits the classical recession, and the Russia-Ukraine still goes on, Europe, they have already announced they may enter into recession in October. So, among the emerging market, as an Indian economy, we really have a good chance, So it's like if I may, I'm not finding the word. If I may, hope for the better future, we may end up getting 15 to 20 MRFs in long-term future. So, am I thinking on the right path, or if you can correct me if possible? No, I couldn't understand what you said in the said at the tail end of your speech. That is, what exactly you are looking at for India? Like if this major economies enters into this classical recession, and among the emerging markets, India is one of the strongest economies we have right now as of today. So can we say we have a better growth prospects in next maybe 20, 25 years? If we start looking at it that way, and start building up our positions that way. Well, what I would like to comment here is this, that again, taking recourse to economic and financial history, I would observe that generally an emerging market economy, say if you take 1991 as the beginning of our emerging market story, then my feeling is that whatever happens, we will actually net we will continue to grow. Maybe in 1 or 2 years there would be, or there could be problems for some years, but as an emerging economy we are likely to grow until say 2050 kind of, because I give you an example of an emerging market, how it progressed at the turn of the 20th century. I mean, not the 20th, 19th century, when 20th century ushered in, US market or US economy was considered an emerging economy. And it became an advanced economy after the post-World War, Second World War. So we have,
and if you track the history of economies that performed well, from emerging to advanced state, it required 50, 60 years. And once you are on the right track, unless, of course, you embrace a completely different form of economy, like a socialist economy or something, that I won't be able to really handle as to what can happen if that were to be so. But otherwise, generally, you may not see 7-8% growth going forward in India, because Indian economy has already advanced quite a bit. Its size is already nearly $3 trillion. Going forward, it will become $5 trillion. So from there, achieving 7 or 8% growth may not be possible, but we will continue to grow. We will continue to grow, and as per the projections of Ruchi Sharma, maybe in 2032, we will actually beat Japan and become the third largest economy. That is possible. But then, see, generally at this point in time, when you are looking at several other markets, assume, just wear the hat of an FII. You will find that Vietnam is going faster, Mexico is going faster, and there are markets, emerging markets, that are cheaper in valuation. In fact, if you compare emerging markets, any emerging market for that matter, India is far costlier. So if you and I had been rational FIIs, we might be seeking opportunities elsewhere and not so much in India. That is something that I'm afraid of, that they again might press sales, and overall economic performance, I suppose we also would have to face a lot of problems, because although we have had a huge bull run, everything fine, but our infrastructure development has lagged. And maybe there is now starting or something. Unless we really beef up our infrastructure, I do not foresee that there would be, growth can be boosted in a big way. That is something I have not been able to figure out as to how we are going to do well. And there are also other pointers, like, say, we are saying that consumption is doing well, consumption stocks are doing great. But look at it this way: Hindustan Lever observed that in the segments that they are involved in, already for 3 years there is a volume degrowth, 3 consecutive years. ITC might be doing well in pockets, but things are not that hunky-dory. So situation, India faring better. India did fare better all these years, but maybe now the same thing could be said about, say, places like Vietnam, places like even in some pockets, Brazilian stocks could be found much cheaper compared to comparative stocks in India. So this is a threat that we have to deal with, and I would be rather cautious. And one thing I would like to tell you: when interest rate cycle changes, look for value stocks. Those value investors have been mauled, battered over the last 20 years. Now their time has come. If you seek value, you are actually would be on a better wicket, because if you are a true value investor, you will actually maintain your margin of safety. But otherwise, chasing growth now, at least in the shorter term, maybe 2-3 years down the road, it may not be that great, because people are not realizing earlier interest rates tightening, all those were temporary measures. But this worldwide inflation, this would have happened. Ray Dalio has been saying about this for the last 3 years. There are other commentators. They have said a lot of things. I urged your, this Twitter space even earlier. Read Dalio's Changing World Order. This is a very important book, and see what is he trying to say. We are not in a very good situation. So expecting that India will continue to perform well, I think that is a tall order.
Yeah, Rajas, the Ray Dalio's Changing World Order video yesterday only I shared with the community. Read the book. Read the book. Yeah, I have to read that book after watching that video. It's very good. I ordered it actually today. It will come day after tomorrow. So I'll definitely going to watch it. हाँ दीपक भाई आपका question please continue. दीपक भाई अंकित जी कुछ रिक्वेस्ट पेंडिंग है क्या स्पीकर्स की? हमको दिखाई नहीं पड़ी, हमारे पास 0 दिख रही है और वैसे 4 लोगों की रिक्वेस्ट दिखाई पड़ रही है। नहीं मेरे को कोई रिक्वेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ना बाहर ना अंदर। तो जिन लोगों ने रिक्वेस्ट दी है वो लोग एक बार उसको एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करके रिक्वेस्ट देंगे तो ठीक है। जय जी आप हाँ अपनी बात रखें तो पूछ लें कुछ। गुड इवनिंग वाजपेयी जी, अंकित जी, रजत बोस जी। रजत जी आपसे एक चीज़ समझनी थी मेरे को। आपने वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए इट विल बी गुड टाइम बताया। अगर आप लेट्स से यू आर अ बिग फंड मैनेजर इन यूएस सिटिंग एंड मैनेजिंग मनी, हाउ वुड यू पोजीशन योर पोर्टफोलियो इन दिस मार्केट अगर आपको एलोकेट करना है? देखिए हम लोग क्या है ना, सब कोई ना रिटेलर्स लोग ना दे टॉक अबाउट ये स्टॉक में पैसा बनेगा उसमें बनेगा, कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात ही नहीं करता है। आपका तजुर्बा है तो आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मान लो X मिलियन का पोर्टफोलियो मैनेज करना है तो आप कैसे एलोकेट करेंगे, किस सेक्टर में, क्या होगी आपकी थिंकिंग इन द करंट एनवायरनमेंट में? थैंक यू सो मच। कोई इज एनीवन स्पीकिंग? Ankit bhai, you could hear my question. Can you hear me? Hello, can you hear me? Yes sir, we can hear you. Okay, I was saying that the asset allocation decision would have to be in primarily stocks that where you can actually seek margin of safety. I haven't closely tracked American stocks to say that here you would be able to allocate capital so easily. I mean that is available at cheaper price. But then only thing is that in such situations, if I tell you that what we normally, I mean, especially complicated business models or difficult to understand business models, they will be shunned. Like, for instance, you are actually looking at very complex growth stories in the sense that such kind of technology involved that is not understandable so clearly, and you will not be able to project what is going to happen going forward because there are so many uncertainties. See, because of this only the birth of the book security analysis actually happened. And Benjamin Graham then did not care what kind of growth that is going to happen. Simply where you see a stable business, at least you can see that the company will continue to perform even if you do not find a particular projectable growth rate. But it's a stable thing and it is available at a decent price where you can actually have some margin of safety. Margin of safety, by the way, I believe it happens only on the basis of the price you pay to acquire a stock. So if you are a fund manager in the US at this point in time, you would be seeking value. And because once the monetary tightening really happens, that means not just interest rates, if money is sucked out of the system, it will be those stocks that will perform this, which offer at current prices some value. But those who are actually doing they had been doing greatly on the basis of their growth projections and all, they might suffer. But I'm not talking about companies like Apple or Google, because you see, whether it is recession or whether it is growth, you will continue to do Google search, and Google has the best best subscription model. Other companies that can come up with that kind of stream of earnings, then even if they are a bit highly priced, on correction there will be a lot of buyers. But particularly which sector is likely to do well, I would say going forward, not just those things that are, the real thing in the sense that, say, mining minerals, because
I said in one of these Twitter spaces that since 2011, there has not been any major mining and mineral extraction and all these things happened. So that kind of thing that are tangible assets, they might do well. And also people with such business model where they can actually they have built a solid moat on the basis of the network they have created, like Google, like Apple. Apple, of course, is also different. They have Apple iPhone and other stuff. So whether the American economy fund managers will allocate in very heady growth prospects kind of thing, that I have doubt, because very heady growth prospects will actually diminish going forward. At least in this particular decade, it may not really perform that well. Have I been able to answer your question? Thank you, Rajat Bose. This was really helpful. रोहित जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना प्रश्न रखें प्लीज। सर रोहित जी नहीं होगा। सर मैं एक चीज ये जानना चाहता था, जैसे आपने बताया कि टाइटनिंग की पोजीशन वो कर रहे हैं और जिस तरह से वो एक मेजर अपना रहे हैं कि भाई हम लिबरल व्यू नहीं अपनाएंगे, तो इस प्रकार के मेजर लेने के बाद हम किसी ऐसी मतलब घटना की तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा खराब कर दे एकदम से पोजीशन इकोनॉमी की, सारे वर्ल्ड की। और ठीक है, धीरे धीरे डिप्रेशन तो हो रहा, बट ऐसा कुछ तो नहीं संभावित लगता है कि जो बहुत बड़ा चेंज हो जाए जो कि संभाले ना संभले किसी से। ऐसी कोई घटना की तो उम्मीद नहीं करते सर। अगर ये कंटिन्यूअस इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा तो इससे पोजीशन कंट्रोल में। दोबारा बताइए, हमारा कनेक्टिविटी फिर प्रॉब्लम किया था, सो प्लीज। सर मैं जानना चाहता था कि अगर फेड की टाइटनिंग पोजीशन जिस प्रकार से है और ये चलती रहती है, तो इससे हमारा इन्फ्लेशन, जैसा आपने बताया कि 12 से 18 महीने में कंट्रोल होने में लगेगा, तो मतलब सुधरने की स्थिति तो है, या कि ऐसी कोई स्थिति नहीं आ जाएगी कि जो सुधर ही ना पावे? सुधारी तो होगा, लेकिन उसके पहले जैसा शायद अनिक ने कह रहा था कि काइंड ऑफ क्लासिकल रिसेशन दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट, वो आने से तो अभी एक बार तो ऊपर की तरफ मूवमेंट में कुछ ब्रेक तो लगेगा ना। एंड अनदर थिंग इज दैट, सी the moment that monetary tightening has been started, the world equity markets have started faltering. That unless you pump in more money, which I don't think is possible at this point in time, because inflation has already reared its ugly head in a real ugly manner, I would say. वो तो तुरंत पॉसिबल नहीं है। तो जहां पे फ्रॉथ है वो फ्रॉथ जाएगा। और ऐसा भी हम थोड़ा I'm little scared about highly leveraged companies now, because whether they are mid caps or small caps or large caps or whatever, यहाँ पे P compression होने की ज्यादा संभावना है। And especially look for companies which are interlinked, say group companies, say one group company shares are being pledged to take a loan for another group company. This kind of complex operations and growth being fostered with leveraged money, those kind of stocks or those kind of companies might come in for trouble. So that's what it isn't going to be that easy. It is very fluid kind of a situation. In fact, I have never seen that the supply chain bottleneck I wasn't factoring in. I was thinking that sooner or later there will be a change in stance in interest rates and monetary loosening, monetary easing, that might change into quantitative tightening. But this supply chain issue that has come from this Ukraine and Russia war, this is actually a second black swan event, and how it will impact the whole world and its economy, I'm still trying to figure out.
तो सर आपने अभी लेटेस्ट वीडियो अपना पब्लिश किया जिसमें आपने मार्केट के आउटलुक के संबंध में भी डिटेल में बताया है, हमने उसको देखा भी था। तो सर शॉर्ट में अगर आप यहाँ जितने हमारे लिसनर्स हैं इनको भी कुछ आगे मार्केट के संबंध में कैसा व्यू रखना चाहिए, एक शॉर्ट में अगर बता देंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। देखिए, हम आपने अगर अपना वीडियो ऑलरेडी देखा है तो एक चीज देखिएगा, वहां पे हम यहाँ पे आप लोगों के संग बात करते हुए मैं ये बोला है कि लगता है कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन डेवलप करेगा, ये होगा, बट एक चीज आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। व्हाटएवर से आप लोग मुझको बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, इसके लिए मैं आभारी हूँ। बट मैं आप लोगों की एक चीज कहना चाहूंगा जो कि मेरा ट्विटर हैंडल पे आते ही आपको प्रोफाइल देखते हुए मिल जाएगा कि आई बिलीव दैट whatever I say, whatever others say, they are all opinion. They are not they are not facts. And whatever way you are looking, I am looking, Anik is looking, Deepak is looking, or others are looking at, they are only perspectives. So we need to see the index and other major stocks going below 200-day exponential moving average that I track. If you track 200-day simple, that is your thing. Both are equally helpful. Unless we fall below that, at least from a technical point of view, we can't say that the market is going into a bear phase once again. So hold your breath and see how things pan out. But I would, some of you who do technicals and who are aware of Fibonacci, Gann, and stuff like that, I tell you, 1996, 17th of June and 17th of June this year, they are very important. In 1996, 17th of June, at 4131, Sensex stopped. When you find another top or another low, a significant low or a top on the same date, it is called a Gann anniversary date. So this time, this low that has happened, after that, if we actually break down below that 15,183, then there will be a lot of problems. So initially the 200-day moving average, and after that this June 17 low, they will be very, very important. If that is that level is broken, then we can actually see much lower levels. That's what I am afraid of. And again, I'm telling you, time has come to seek those value stocks if they are available, and if they are not, one thing, if you have to succeed as an investor, then you must have patience. Even I coach traders, I tell them that you have to be patient. When you get the right feel for your trade, then only enter, or then only take a position, not before that. So if you do that, then you will have problems. But then even a person like me, I gave a sell call on a particular small cap stock, and that I said on Thursday, but after that on Friday it shot up, and I am already facing a lot of criticism for that. So this will continue to happen anyway. Rajesh sir, one last question from my side. If you track sentiment cycle, can we say we have just hit the wall of worries? Wall of worries. In that case, we are if bull market climbs the wall of worries, yes. Wall of worries. Saying that, this particular phrase has a connotation. That is, when you say wall of worries, we have hit the wall of worries, that means the bull market is likely to continue. The subtext will be that. So if you are saying that, then I would say, if you are saying that, then I would say that I'm sorry. I really don't think that we are climbing a wall of worry and the bulls are going to stage a big comeback or something. It is very, very unlikely. Very, No, very unlikely. Jay, if you can explain that particular part.
Hi, Ankit ji. So, Rajat ji, what Ankit ji is trying to say is that if you check the sentiment cycle right across stock market, what really happens is first you go through a enthusiasm phase, then you enter a panic phase, then you enter a discouragement phase, and from the discouragement phase you enter a quick up move which creates a wall of worry, and from the wall of worry you fall to something we call another dip happens in the sentiment cycle. I forgot the name. That dip happens, and from that dip again denial happen and a new bull market starts. So what Ankit is trying to say is that from the top of the sentiment wall of worry, we actually going to the aversion dip, and then a new bull market will actually start from there. Well, um, I would say that is a possibility. Yes, I could. I mean, this classification I wasn't really very conversant with. Anyway, I've learned something new. Thank you for that. By the way, don't take this as a sarcastic comment. I'm really I did not know this classification as such, and that's what I'm saying. Anyway, if you say that, yes, that is a possibility. But this time, the bull markets that you get, they may or may not. Actually, I tell you, I was asked this question also on TV, that if at some point in time we cross 18604, won't you call it a bull market again? My point is that from a Charles Dawes theory, then you have to classify that yes, we are entering a new bull market. But long back in the 90s, I worked under an Elliottician. He may not be a very intellectual type, but he was an astute trader, and he taught me one thing. He said that you Dow theory he was an Elliottician. He still is, and he said that unless you see, say this time the fall is from 18604 to 15183, unless you can actually see it going beyond 1.27 times of the total price amplitude of this bear market, you cannot say that a fresh bull market has begun. It could well be a suckers rally. It could well be a suckers rally. And generally, what he said at that point of time actually tallies with what has happened now. That he said that you will find find a rally which just goes up non-stop, crossing barriers one after the other, and might even cross your top, but it falters before it actually completes that 1.27 times price amplitude of the total bear market. And I asked sir, after that what happens? After that, he says that there will be sharp fall, or there can be a graduated fall, but there will be a new low. But this new low this time, I don't know where this new low will happen below 15183. If you ask me sincerely, because I do not try to project those levels. Earlier, I used to, and when it used to hit and market bounce back, I'm talking about, the market close to the year 2000. At that point of time, I used to indulge in such exercises. I did it up to 2008 or so, but they bias you. They create a bias. Why? You will find me tentative in the YouTube videos that I have posted, that if this level gets broken, then I will say the bear market has resumed again and all that. Because all these discussions may not really apply if for any reason, I don't know, for any reason, say, suppose something were to happen in Indian market and it moves up. But generally, you can calculate from 18604 to 15183 the difference, and that 1.27 times add from 15183. This level, if crossed, and if still one person continues to remain bearish, stating economic fundamental factors, then God help him or her. अमित जी, आप अनम्यूट करके कुछ अपनी बात जो रखना चाहते हो या प्रश्न करना चाहते हो तो प्लीज करिए. अमित चौधरी जी. Hi. Hello, Rajat sir, and hello everybody, panelist. About see,
if I talk about the international market, I have no idea. But for Indian market context, yes, few major stocks of Nifty are looking quite weaker, like HDFC, HUL. Reliance also is not very much strengthened, including Infosys and TCS. So, including these five counter, I can say around 40-45% of Nifty is tending to be weaker. Even it happened before this Dow fall and everything. So, my sentiment is not positive as of now. I am just quite cautious to negative side. If we talk about the bear phase, no, I don't think so. There will be any chance of a bear phase even, but yes, we can go for some corrections point of view. For me, the bear phase will start below 14,000 somewhere. So for me, the levels are quite so far. Even last wale fall, maybe bear to मैं नहीं बोलूँगा, but it was a very deep down correction. So for me, it is quite different levels. But हाँ, यहाँ पे long करना it's quite not good for that. But yes, if again the recent high, whatever we made around 18,000 plus minus 100, whatever it is, if it will resume again above that level, so definitely we can head for a fresh new high. But before that, I would like to short if any kind of surge will happen. बिल्कुल 2-3 दिन 1-2 दिन के आपको बाउंस अप्स मिल सकते हैं. इट्स नॉट वेरी न्यू. हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि मार्केट जब कभी शार्प फॉल आता है तो कभी बड़े बड़े उछाल मिल जाते हैं. सो इट्स नॉट अ वंडर. आपको वापस से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है अंटिल रिसेंट हाई डिडंट गेट क्लियर. इट्स माय पर्सनल टेक ऑन दिस. थैंक यू अमित जी, थैंक यू. तो आप प्रिंस जी आप पूछें क्वेश्चन आपका जो जी. हेलो, हाँ प्रिंस जी. अंकित जी आप पूछ लीजिए इस बीच में जब तक प्रिंस जी नहीं बोल पा रहे. गुड इवनिंग अमित सर. अमित सर, अभी जो करंट स्विंग चालू है उसके डाउनसाइड टारगेट प्रोजेक्शंस कुछ निकाले हैं आपने? अमित जी कुछ आवाज आ रही है आपको अमित जी? हेलो, नहीं आ रहा है. आई थिंक वो भी डिस्कनेक्ट हो गए. तो चलिए सर, रजत सर ने हम लोगों को काफी अपने जितनी भी जानकारी थी बहुत अधिक समय भी दे दिया हमको. हमने तो थोड़े समय के लिए रिक्वेस्ट की थी, परंतु बहुत अच्छा लगा कि आज उन्होंने हमको बहुत डिटेल में हर चीजें बताई हैं. तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. अब मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ना चाहता हूं. तो सर अनीश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क जो भी आप करना चाहें, या कोई रजत बोस साहब से आपका क्वेश्चन हो तो वो, अन्यथा अपना कंक्लूडिंग रिमार्क कुछ रखने की कष्ट करें. अनीश जी. जी वाजपेयी जी, तो बेसिकली तो वही है कि जैसे रजत जी ने कहा और मैंने भी पहले कहा था कि ये फेड अभी काफी एग्रेसिव होगा. और एक लास्ट चीज मैं ऐड करूंगा, ये जो रेट का इसका कैलकुलेटर आता है उसका द सडनली इट हैज स्पाइक्ड to 64%, the chances of a 75 basis points hike. तो ये 3 to 3.25 के रेंज में चले जाएगा. एंड ऐसा लग रहा है कि ये 4% तक जाएगा बाय दिस एंड ऑफ मार्च ऑफ 23. तो ये है. तो फिर हमारा भी आरबीआई का रेट इज लाइकली टू गो टू एटलीस्ट 6%. सो ऐसा जो सिनारियो जो डेवलप हो रहा है उसमें it's very unlikely that markets will cross the new highs anytime soon. In fact, if we are able to protect maybe 16,000 or 16,500, then I think that will be a good thing. Otherwise, things are not looking good on the economy as well as the markets front. And but that's all. And I think most of it has already been covered. Thank you. हाँ अंकित जी, आप भी कुछ अपनी अगर अंतिम रूप से बात रखना चाहें और रजत बोस साहब कुछ और पूछना चाहें तो, नहीं तो फिर अब हम रजत बोस साहब को धन्यवाद दे करके. जी अंकित जी प्लीज. अंकित जी. अच्छा हाँ प्रतीक, हाँ आप बोलो प्लीज प्रतीक. रजत सर गुड इवनिंग. रजत सर मेरा क्वेश्चन है ना वॉलेटिलिटी को लेके था कि जो चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लास्ट सितंबर से अभी तक है ना जो ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग है ना वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो अपन अगर जैसे सपोज मार्केट में लेवल्स या कुछ भी निकाल रहे हैं वो इतने फास्ट एंड फ्यूरियस मूव हो रहे हैं जैसे यूएस के अंदर 2-3 साल पहले होता था.
मतलब यूएस में अप्रोक्सीमेटली 3-4 साल पहले बहुत ऑप्शंस में वॉल्यूम्स बढ़ गए थे, तो उसकी वजह से मूव इतने फास्ट एंड फ्यूरियस होते थे। लाइक अगर नीचे गिरेंगे तो बहुत फास्ट से गिरेंगे और ऊपर आएंगे तो भी बहुत फास्ट आएंगे। तो सर अगर आप मतलब हिस्टोरिकली देखेंगे तो ऐसा डेटा यूएस में होता था क्या पहले, या फिर अभी इतना वॉल्यूम रहेगा तो फिर तो वॉलेटिलिटी हमेशा ही रहेगी? जो 2-2 करोड़ का एक स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, पहले वो 40-50 लाख होता था, अब तो 2-2 करोड़ रुपए 2-2 करोड़ क्वांटिटी एक्सपायरी के दिन होता है वीकली में। Vajpayee ji, we also have Rohit Srivastav ji with us. If he is free, he can like I invite him to join the panel. मैंने रिक्वेस्ट उनको भेज दी है, आप भी थोड़ा बोल दीजिए एक बार। हाँ, मैंने रिक्वेस्ट मैंने भी भेजी है, आप अंकित जी मैंने भी भेजी है, तो रोहित जी आपसे रिक्वेस्ट है रोहित सर, if you are free, तो please join the panel please. हाँ रजत जी। हेलो। हाँ सर, आवाज जी सर। No, what I was trying to say is that increase in volatility generally not a very good thing for any directional market. But because the options activity is so great, so maybe that is happening and that has become a natural thing. But Rohit is here. I suppose Rohit can actually give much more light on this because he tracks all these in much greater detail than I do. So I would request Rohit to take this question. रोहित जी प्लीज हम लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके प्लीज आप स्पीकर के उसमें आ जाएं। थैंक यू। तब तक वाजपेयी जी मैं लूं ये वोलेटिलिटी वाला क्वेश्चन। ले आप बता दीजिए, फिर कुछ आप ही बता दीजिए। देखो वोलेटिलिटी अभी हम पहले इसको दो एस्पेक्ट्स में हम इसको क्वेश्चन को क्रैक डाउन करते हैं कि एक हो गया कि अमाउंट ऑफ एक्टिविटी जो कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप हो रहे हैं वो, एंड दूसरा हो गया वोलेटिलिटी एस्पेक्ट उसका। तो जैसे जैसे हमारे मार्केट में पर्टिकुलरली ऑप्शन चेन्स में ये अमाउंट ऑफ एक्टिविटी बढ़ता जाएगा तो ये इवेंचुअली इन सम टाइम में भी कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद ये धीरे धीरे बाकी स्टॉक ऑप्शंस में स्प्रेड हो जाएगा। तो इट्स द साइकिल विच एवरी मार्केट गोज थ्रू। तो इसका इतना हमको नहीं देखना चाहिए। रहा 2-3 साल पहले का जो सिचुएशन था तो उस टाइम पे तो वोलेटिलिटी ऑल ओवर वर्ल्ड हाई ही था। मतलब कोविड फॉल आया, फिर कोविड के बाद में जो फॉल के बाद में रिकवरी आया, उस टाइम पे वोलेटिलिटी वाज हाई ओनली एवरीवेयर। तो वो एक पर्टिकुलर सिनेरियो एक ब्लैक स्पॉन इवेंट था बेसिकली। अगर वो कंडीशंस छोड़ के हम बाकी का देखें तो यूएस मार्केट का वोलेटिलिटी या हमारा वोलेटिलिटी इतना ज्यादा डिफर कभी नहीं किया है। अभी हमारा मार्केट फास्ट मूव हो रहा है बिकॉज पार्टिसिपेशन जो है पर्टिकुलरली इंट्राडे पार्टिसिपेशन ये काफी बड़ा हुआ है। ट्रेडर्स आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग द मार्जिन बेनिफिट्स जो हमको सेबी ने दिया हुआ है। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत अभी इश्यूज है। इवेंचुअली इट्स अ गुड थिंग फॉर मार्केट ओवर लॉन्ग टर्म। तो ये थोड़ा बहुत कड़वा दवाई है, थोड़ा हम अगर उसको सहन कर ले तो हमारे लिए ही आगे ये अच्छा चीज होगा। बिकॉज इससे मार्केट को इंट्राडे पर्सपेक्टिव या शॉर्ट स्विंग पर्सपेक्टिव जो डायरेक्शनल मूव्स होता है वो काफी मतलब उसके लिए मार्केट मैच्योर हो जाएगा बेसिकली। तो इसके ऊपर ज्यादा कॉन्टेक्स्ट अगर आपको पढ़ना है तो दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज गिवन इन एडवर्ड मैगी का बुक में वोलेटिलिटी चैप्टर में एज इट इज। यही क्वेश्चन का जो प्रतीक जी ने क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में ही एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड उसमें लिखा हुआ है। जी जी थैंक यू। तो अंकित जी रोहित जी शायद या तो बिजी हैं या जिस भी रीजन से शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आज फिर रजत बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने हमको फेड के स्टेटमेंट के बाद तो इतनी डिटेल में सब चीजें बताई हैं। सर ने अपने वीडियो में जो डिटेल्स दी हैं वो तो हम लोग सुनते ही हैं, सब लोग उनको सुन करके उससे भी समझ सकते हैं। और सर आपका जो भी टेक्निकल एनालिसिस रहता है मैं तो बहुत मतलब 2004-5 से मैं देख रहा हूँ
और भी बहुत सारे एनालिस्ट को मैंने देखा है, बट आपके जो फेल होने वाले हैं या स्टॉप लॉस होने की संख्या है वो बहुत ही कम रहती है। बहुत ही कैलकुलेशन के बाद आप देते हैं, तो इसलिए 1-2 तो किसी के भी हो जाएँगे। तो जैसे आप कह रहे हैं परसों हमने दिया, उसमें वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो एक आध से सर कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन फिर भी आपका जितना सॉलिड रहता है और जितना आप कम देते हैं, तो पहली बात है आपकी बहुत ही कम रिकमेंडेशन देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि वो हम लोगों के लिए जो भी सुनते हैं उनके लिए लाभ ही मिलता है, क्योंकि हम अगर 10 ट्रांजेक्शन किए तो 10 में से 9 में अगर फायदा हुआ तो 1 में स्टॉप लॉस जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मैं एक चीज और आपसे लास्ट में क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जैसे नेटको फार्मा, वैसे स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक है, लेकिन उसमें केवल मैं टेक्निकल पॉइंट से आपसे जानना चाहता हूँ कि नेटको फार्मा 52 वीक के लो पे आया और 50% अपने हाई से वो रिट्रेस हो गया। अभी रिसेंट रिजल्ट आए हैं, उस रिजल्ट में भी उसने काफी पॉजिटिव रिजल्ट दिखाए हैं, मतलब कई क्वार्टर के बाद उसका काफी अच्छा रिजल्ट आया है। इसके बाद भी रिजल्ट के आने के तुरंत बाद वो फिर 15% गिर गया। अब जब मूविंग एवरेज सिस्टम पर हम उसे देखते हैं तो मंथली मूविंग एवरेज में वो 100 मंथ के मूविंग एवरेज के पास पहले आके वहां से उसने सपोर्ट लिया था, अब वो उसके नीचे फिर ट्रेड होने लगा। तो इतने अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी क्या ऐसे स्टॉक को फिर हम और फर्दर कोई दूर का मूविंग एवरेज देख करके इन्वेस्ट करने के लिए सोचें, या फिर जब 100 मंथ से भी नीचे चला गया है या 50% रिट्रेस हो गया तो ऐसे स्टॉक को फिर इन्वेस्टमेंट के लिए ना सोचा जाए सर? ऐसे मतलब इसी तरह के और भी हो सकते हैं, मैं केवल स्पेसिफिक, क्योंकि इसमें रिजल्ट भी काफी बेहतर थे, उसके बाद भी रिजल्ट के बाद जिस प्रकार से गिरा, तो इससे थोड़ा सा मुझे डाउट होने लगा कि किस प्रकार से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाए। नेटको फार्मा तो मैं फंडामेंटली ट्रैक नहीं करता हूं, बट एक चीज आपके बोलने के बाद में जो मैंने देखा कि आपने जो कहा वो चार्ट में सीधा दिख रहा है कि रिजल्ट आने के पहले ही इसमें बहुत अच्छी मूव दिया था, करीबन 625-600 इसी रेंज से चढ़ के वो 760-70 के आसपास पहुंच के फिर नीचे आना चालू कर दिया है। Point is this, that this stock is continuously giving dividend every quarter. It has given dividend that I can see, and the results are also quite good. But I really don't understand as to why it fails to take out its 200-day moving average every time since last year August. मतलब एक साल के बाद में वो अगस्त सितंबर लास्ट ईयर के बाद में जब 200 डे के नीचे आया, उसके बाद में ऊपर सस्टेन करते हुए भी फिर नीचे आ जाता है। इसमें बाजार क्या ऐसा कुछ जानता है जो कि ये अर्निंग्स और डिविडेंड पे आउट में नहीं दिखता है? ये या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जिस क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड रिसर्च व्हाटएवर दे आर डूइंग उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है, तो इसीलिए कोई लोग प्रॉफिट बुकिंग करके इतना जबरदस्त रूप से प्रॉफिट बुक करके चला गया कि उनका उम्मीदें और ज्यादा था। ये बोलना मुश्किल है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि अगर इसको आप ट्रेड करेंगे तो देख लीजिए इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड क्लियरली आपको कोई को भी, किसी को टेक्निकल एनालिस्ट नहीं होना जरूरी है कि होना जरूरी नहीं है कि ये मेजर डाउन ट्रेंड में है। एटलीस्ट वो डाउन ट्रेंड तो 1200 का लेवल से चलते हुए आधा हो गया, उसके बाद में फिर चढ़ा, फिर जहां से शुरू किया वहां वापस पहुंच गया। इतना 100% रिट्रेसमेंट ऑफ द प्री क्वार्टरली रिजल्ट मूव, एंड जबकि वो रिजल्ट काफी अच्छा रहा, डिविडेंड भी अच्छा रहा इस बार, तो क्यों ऐसा हुआ ये बोलना मुश्किल है। बट एक चीज देख लीजिएगा कि इसका डिविडेंड तो हर बार दिया है, लेकिन पिछले 3-4 क्वार्टर में ये एक्सपेक्टेशन से कम परफॉर्म किया, और अभी इस बार एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया। फिर भी शायद ये हो सकता है कि लोगों को इसमें कॉन्फिडेंस की कुछ कमी है। ये इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से एज टू व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन, बट द प्राइस शोज दैट द डाउन ट्रेंड इज वेरी मच ऑन एंड इट कंटिन्यूज। जी सर, जी सर, डाउन ट्रेंड तो सर है। मैंने बस खाली इतना इसलिए किया कि जैसे फाइनेंस अगर मतलब फंडामेंटल्स इतने खराब अगर नहीं है तो क्या इनको हम नीचे लेवल पर एक्यूमुलेशन मतलब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ SIP के माध्यम से क्या करना उचित रहेगा? ऐसे स्टॉक मतलब इसमें ही नहीं, इस प्रकार के अगर कोई अन्य स्टॉक भी, जैसे हम लोगों ने उस दिन KSCL कावेरी सीड को भी देखा था कि वो भी डाउन ट्रेंड में था, 52 वीक के लो पर था, पर फंडामेंटल्स आपने देखे थे उसके ठीक ही थे।
तो सर मतलब खाली मैं ये एक एडवाइस के रूप में कि ऐसे जो स्टॉक हमको मिलते हैं, क्या उनमें हम लोग थोड़ी-थोड़ी बेट ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो अर्निंग्स परफॉर्मेंस आपने देखा है ना, अर्निंग्स परफॉर्मेंस देखने के संग ये जैसा मैंने कहा कि इसके बारे में मुझको फंडामेंटली कुछ पता नहीं है। ये 17 रुपया 60 पैसा का दिया था, एस्टिमेट था करीबन 15 रुपया 30 पैसा, तो अबाउट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू 14.75% करीब ओवर द एक्सपेक्टेशन परफॉर्म किया है ये। बट व्हाट इज द अर्निंग्स ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड, उसमें या उसका क्या गाइडेंस, क्या बोला है आगे जाके क्या करेगा? ऐसा अगर बात है कि ये जो परफॉर्म इस बार किया है ऐसा परफॉर्म वो दोबारा कर नहीं पाएगा, कि आगे जाके परफॉर्म करना और मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कुछ सिचुएशन है तो ये जो प्रॉफिट बुक करने का चक्कर आया वो पूरी तरह जस्टिफाइड होगा। और कारण तो कुछ है, क्योंकि उतना जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग जो चार्ट पे दिखाई दे रहा है वो देखते हुए लगता है कि इसमें आगे जाके परफॉर्मेंस के ऊपर लोगों की कॉन्फिडेंस काफी कम है, इसीलिए इस तरीका का सेलिंग हुआ है। आई वुड से दैट don't trying to bottom fish stocks sometimes can be counterproductive. आपको जो करना चाहिए वो है कि शुरू का मूवमेंट एटलीस्ट छोड़ दीजिए। एटलीस्ट यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जितने बार या तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनिए कि 200 डे के आसपास जाएगा आप उससे निकल जाएंगे प्रॉफिट बुक करके, तब अलग बात है। दूसरी बात यह है कि आप अगर उसमें निवेश करना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए, तब एक बार ये इसका पड़ाव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो पड़ाव है वो अगर इतना ही जबरदस्त है कि वो पार नहीं कर पाता है, तो वो पार करने के बाद में एक्चुअल जो पोजीशन आप जितना लेना चाह रहे हैं वो तब लीजिए। टोकन पोजीशन पहले भी ले सकता है, बट अदरवाइज ट्रैक रिकॉर्ड ये बोल रहे हैं कि इसमें 200 डे जब तक नहीं क्रॉस करेगा। अगर कोई मुझको पूछा होता कि ये निवेश करने लायक कब बनेगा, मेरे लिए ये निवेश करने के लायक बनेगा तभी जब ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके एटलीस्ट 2-3 वीक रह सकता है। अगर आप बोलेंगे कि वो शूट अप करके चला जाएगा 750 770 या इस रेंज से 10% आगे निकल जाएगा, तो हम नहीं लेगा, हम बैठा रहेगा, वो नीचे आएगा तो ठीक है। अरे यहाँ पे कितने सारे स्टॉक है, एक नेटको फर्मा निकल गया तो कोई दूसरा कुछ चीज आ जाएगा जिसमें हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बगैर मैं निवेश करने के लिए कभी पैसा नहीं लगाना चाहता है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही हमको लोगों क्लियर एडवाइस दे दी। विदा मांगता हूँ, हम विदा लेते हैं आपके लिए। नहीं सर, आप मैं बस खत्म ही करना चाह रहा था, इसीलिए मैं केवल लास्ट क्वेश्चन था मेरा ये। तो मैं सर बहुत आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने हम लोगों को इतना समय दिया और इतना हम लोगों का जो है मार्गदर्शन किया है। स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपने चार्ट में हमको ये बात बता दी कि 200 डीएमए एक बहुत ही अच्छा लेवल है जिसके नीचे हमको अवॉइड करना चाहिए और उसके ऊपर ही लेने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है सर, मैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना समय हमको दिया है। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। वाजपेयी सर, ये भी आपने नाटको फार्मा के लिए बोला ना, उसके अंदर जो 100,000 मिलियन के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है ना, वो स्टॉक की वजह से हुआ है, तो उसको मार्केट ने ठीक से नहीं लिया। और सेकंड थिंग, जो ये फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया, इन्होंने एक कंपनी एक्वायर करी थी तो उसकी वजह से इनकी सेल्स में ग्रोथ है। एक यूएस की कंपनी उन्होंने एक्वायर करी है 1 जनवरी 2022 को आई थिंक, तो उसका इस क्वार्टर में इम्पैक्ट आया है। तो वो दोनों का भी सेपरेट इन्होंने पब्लिश नहीं करे रिजल्ट की उस कंपनी के वजह से कितना है, तो वो कंफ्यूजन है मार्केट को, इस वजह से इसको अभी वैल्यूएशन नहीं दिया गया। इन्होंने कॉन कॉल में बोला था ये। थैंक यू प्रतीक जी। तो धन्यवाद सर, रजत बोस सर, अनिश जी, अंकित जी, प्रतीक जी, जितने भी हमारे बीच में लोग जुड़े, रोहित श्रीवास्तव साहब को भी, समस्त लिसनर को बहुत बहुत धन्यवाद सर।